I'm Sneha Netia, an English educator as well as a freedompreneur. And a very warm welcome to you all at my channel Learn English with Sneh. And so guys, as you all know that vocabulary is something that helps you in every examination. Either you go for a banking exam, you go for an SSC exam or any other exam, wherever an examination where something is related to vocabulary. So it's really a major portion of English section, okay, that will help you to qualify this section in your exams. Okay, it will help you in reading comprehension, to reading something, or it help you in close test. It will help you in error detection as well. So guys, before starting this session, I just want to share a thought of the day today. The thought is, an optimist loves to forget and a pessimist forgets to laugh. So students, there is a lot of difference between these two, because if I talk about the meaning of this thought, an optimist, as you all know that optimist is a positive thinker, is a hopeful person who always sees the brighter side of the things. Okay, but if I talk about pessimist, it's a negative thinker who always thinks about the negative things, right? So the meaning of this thought is, an optimist loves to forget his worries, his hardships, his problems. That means optimist जो person होता है वो हमेशा अपनी worries को भूलने के लिए हंसता है, राइट? उनकी उसकी हार्डशिप्स को, उसकी लाइफ की जो डिफिकल्टीज हैं उनको भूलने के लिए वो हमेशा हंसता रहता है, हमेशा स्माइल करता रहता है. बट इफ आई टॉक अबाउट अ pessimist is a person who forgets to laugh. वो हंसना ही भूल जाता है, राइट? दैट मीन्स सो ऑलवेज ट्राई टू laugh in your life to forget your worries. Okay, so try to implement this thought in this quote in your life. And so today's session, I just want to let's start this session with vocabulary, the enrichment of vocabulary. The first word that we have given is domicile, and the meaning of this word, as you people are well known to this word domicile, the meaning of this word is treat specific country a particular or a permanent home. I can say permanent because you all are Indians and you all have a domicile of Indians. Okay, you all have a citizenship of India. That means domicile means very simple. आपकी जो नागरिकता है, that means you are a citizen of India. सो आपके पास जो नागरिकता होगी वो कहाँ की होगी? इंडिया की. तो उस नागरिकता के लिए जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेशन है, ओके, जो आप रेजिडेंस यहाँ के हो, ओके, तो उस सर्टिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? डोमिसाइल. सो कम टू सिनोनिम्स. ओके स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड, the most important synonym of this word which is asked in your examination is dwelling. It's really very important for close test, guys. This is again and again asked in closest options. Okay, or I can say habitation. It's very important. It's very easy to know, and you can say residence, etc. And if we talk about antonyms, that means opposite words to domicile. Antonyms, what we call for domicile antonyms, I can say homelessness, राइट? जिसका कोई पर्टिकुलर होम ना, जो इंडिया में भी रहता है, कभी कनाडा में भी, मतलब जिसका पर्टिकुलर सिटीजनशिप नहीं है. ओके, इफ यू गो फॉर सम अदर कंट्री एंड यू स्टे देयर फॉर लॉट्स ऑफ इयर्स एंड यू डोंट हैव अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एज वेल एज यू डोंट हैव अ सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, सो यू कैन से इट्स होमलेसनेस. ओके, और व्हाट वी कॉल इट फॉर माइग्रेशन, राइट? You can say migration also. Okay, so the next word is not, let's take an example for domicile. She has a domicile of origin in Germany. Got it? That means I can say
somebody, she has a domicile of origin in Germany. अगर किसी के पास जर्मनी का डोमिसाइल है तो आप क्या बोलोगे कि उसके पास जर्मनी का डोमिसाइल है, दैट मीन्स उसके पास जर्मनी की सिटीजनशिप है. Okay, she is a particular, she is a member or she is a citizen of Germany, not India or not any other country. Okay, so next, now come to the next word, that is content. So just take a screenshot of this so that I'll forward with another word. Okay. The next word that we have is content. So what do you think, guys? What's the meaning of content? Okay. There are two words, content and content. Content, I'll talk you later about content. The first word, that is content. Content means to struggle, or I can say to face the difficulties. Okay, to face the problems, to struggle a lot in your life is known as content. Okay, so I think you all know the meaning of content. So now come to synonyms. Synonyms, I can say face, that I already told you, resist, okay, or I can say withstand. Friends, remember this word, this is important for you all. Okay, what about antonyms? What we call for antonyms? Tell me. Okay, please. क्या होंगे antonyms? I can say allow. अगर आप resist कर रहे हो तो opposite क्या हो जाएगा? Allow, or I can say forego. Okay, these are antonyms for this word content. Now come to an example of content. The example of content is she had, okay, I just write it here. She had to contain her temper. Okay, उसे किसके साथ स्ट्रगल करना पड़ा? उसके गुस्से के साथ. टेम्पर मीन्स गुस्सा. Okay, so these this is the main of content actually. So now come to the next word. The next word that we have given is succor. Students, succor is a good word, okay, and I think if you are a regular reader, you are a regular reader of The Hindu or any other newspaper, so I think you know this word succor. Okay, the meaning of succor is assistance or support someone in difficulty. Okay, assistance or support someone in difficulty. Got it? So students, the meaning of succor, I think you all got to know, to provide assistance or help, or I can say to provide aid, to help someone who is in hardship. Okay, जो problem में है उसकी मदद करना is succor. It's very simple. Okay, so what are the synonyms of succor? अगर हम बात कर रहे हैं assist करने की, तो क्या कहेंगे? assist करने को आप क्या बोल सकते हो? Aid, you can say help, yes, or what do you call for it? You can say guidance, yes. So now come to antonyms. Antonyms are, अगर आप यहाँ पे किसी को असिस्ट कर रहे हो तो उसको रेसिस्ट करोगे. ओके, एंटीनिम्स में क्या हो जाएगा? किसी को हर्ट करना, किसी को स्टॉप करना कुछ अचीव करने से. ओके, थॉट, ओके, और व्हाट यू कॉल काउंटर एक्ट. एग्जैक्टली, काउंटर एक्ट. Students, these two words are very important. Please try to recall these words. Thought means just to stop someone to achieve something. Okay, तो thought means समझ में आ गया? तो succor का opposite है. Okay, so let's take an example of succor. I can say prisoners of war were liberated and succored.
ओके जो वॉर के प्रिजनर्स थे उनको लिबरेट कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, उनको फ्री कर दिया गया, और दूसरा क्या बोल सकते हो, उनको उनको असिस्ट किया गया, दैट मीन्स उनकी हेल्प की गई. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव गिवन is cohort. It's very important that this word, all these words are given in the last day, the Hindu editorial. The next word is cohort. Okay. Friends, what do you think about this word? Any idea about this word? Cohort means a group of people. A group of people with similar opinions. Fine? That means ऐसे लोगों का समूह जो जिनका जो ओपिनियन है वो सेम हो, ओके, सेम कैरेक्टरिस्टिक हो. ओके सो व्हाट विल बी द सिनोनिम्स फॉर कोहॉर्ट. अगर आप ग्रुप बोल रहे हैं तो ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्रुप में हमेशा सिमिलर ओपिनियंस ही होते हैं, तभी वो ग्रुप बनता है. सो कैन आई से रेजिमेंट इन सिनोनिम्स? रेजिमेंट. कैन आई से आर्मी? कैन आई से बटालियन? और यू कैन ऑल्सो से यूनिट, because unitary जब भी आप एकता में होते हो तो you always act as a group. Okay, so these all, or squad also. Okay, squad is also a synonym of cohort. Okay, cohort का मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. एक तरह का विचार जिनका होता है, इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहेंगे, cohort. Okay, अब अगर बात की जाए ऑपोजिट वर्ड्स की, ओके, तो ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे इसके cohort के. तो अगर हम बात करें इकट्ठे की, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटीनिम्स क्या होंगे, सोचिए. फॉर्म. फॉर्म मीन्स संकट होता है, बट संकट की घड़ी कब आएगी, जब आप डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे. एंटागोनिस्ट और आई कैन से ओपोनेंट, इट्स वेरी इजी. ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट जो हमेशा ऑपोजिट ही चलता है, जिसके व्यूज हमेशा अपोजिट होते हैं, दैट्स कॉल्ड एंटागोनिस्ट. एंड द वर्ड इज ऑलवेज anti word is related to opposition. Okay, so remember this word. Or I can, if I take an example, so I can say a cohort of civil servants, a cohort of civil servants patiently drafted. Okay, can I draft this? A cohort of civil servants drafted, patiently drafted, legislations. Okay, that means civil servants, जो civil servants होते हैं like IPS और इन सब में यूपीएससी के थ्रू जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, ऑल दोज आर सिविल सर्वेंट्स. तो सिविल सर्वेंट्स के एक ग्रुप ने क्या बनाया, लेजिस्लेशंस को ड्राफ्ट किया पेशेंटली, धैर्यपूर्वक. ओके, सो आई थिंक यू गॉट टू नो दिस वर्ड. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव गिवन इज untenable. It's very easy, it's very important word. I think some of you are not known to this word, that is untenable. Okay, what does it mean, guys? Please try to understand, try to tell me. Untenable. The meaning of untenable, basically I'll give you a hint. This word is specifically used for opposition or opinions, or I can say views. Okay, now tell me the meaning. What's the meaning of this word? So I can say untenable is which is not able to justify, or we can say which can't be supported, or something which can't be justified. Okay, so the meaning of untenable is, and the thing which is not justified is invalid. Understood? So I can say invalid. Okay, okay, जिसको जो सही नहीं है, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप सपोर्ट नहीं करते हैं, वो चीज क्या है, क्यों सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिस इज रॉन्ग. सो ओके, सो रॉन्ग, इनवैलिड, अनसाउंड,
okay, flawed. All these words are synonyms of untenable. Okay, if I talk about antonyms, so whenever you have given an, okay, before a word, that word would be an opposite to the other word. Okay, like if I talk about tenable, tenable would be this antonym of untenable, because untenable means invalid or tenable means valid, right? So I think you got to know this word. If I take an example of this untenable, so I can say this argument is clearly untenable. This argument is clearly untenable. I think this argument is totally invalid. It's clearly invalid. I'll not support it. Okay. So the mean of untenable is which can't be supported. जिसको आप support नहीं करेंगे, that's called untenable. Okay. So now come to the next word, and the next word is very important, very reiterating word, which is asked in exams again and again. Okay. And very nice word. So I can say mitigating. Actually I forgot the number. Mitigating, or I can say mitigate. Students, what's the meaning of mitigating? Please tell me if you have any idea. Okay, mitigate means to reduce something. To reduce something, or to curtail. अभी नहीं समझ में आया? Means कम करना, किसी चीज को छोटा करना. Okay, like if you have a paper, if you have a sheet, okay, if you have a complete sheet and if you don't require the whole sheet, so what will you do? You can cut this sheet, okay, and after cutting the sheet, you will take a sheet like this, okay, because you want this paper, you want this piece of paper, okay. So what you did, that means to curtail something or to shorten something, for betterment, okay. Let's take an example of this word. Students, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्स का. जब आप एग्जाम देने जाते हो तो अपना एक एडमिट कार्ड साथ में लेके जाते हो, राइट? फाइन. और उस एडमिट कार्ड के अंदर, लाइक यहाँ पे इस तरह का एक एडमिट कार्ड होता है, एक हार्ड कॉपी होती है. यहाँ आपका एड्रेस होगा, यहाँ एक ब्लैंक स्पेस होता है वेयर यू नीड टू अफिक्स योर फोटो, ओके. And if you have a photo of this size and you have a space of this size, so what will you do? You need to affix this photo in this space or in this place. So we just try to cut a photo from all the sides, okay, equally, just to affix this photo in this space, okay. तो हम क्या करते हैं, उस फोटो को कट कर देते हैं चारों तरफ से इक्वली, ताकि वो उसके अंदर इजीली फिक्स हो जाए. तो आपने क्या किया, आपने उसको सही बनाया ना, वो चीज गलत थी वहां पे, उस अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने उसको क्या किया, आपने बेटरमेंट के लिए उसको कट किया, ओके. तो किसी भी चीज को इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप छोटा करते हो, ओके, दैट इज नोन एज मिटिगेटिंग. आई थिंक यू गॉट टू नो दिस वर्ड, ओके. सो what will be the synonyms? Synonyms, I already told you lots of synonyms: reduce, curtail, shorten, or I can say, can you say brief? Yes, brief word is basically used for explanation. So yes, you can say brief, as well as you can say assuage, pacify, or you can say alleviate, okay, diminish. All these are synonyms of mitigating, okay, right? और आप अगर इसको लर्न करना चाहते हो, अगर लर्न की बात करें तो आप क्या बोल सकते हो, मिट्टी, और लास्ट में लिखा है गेट. तो मिट्टी का गेट बारिश आने पर क्या हो जाता है, ढल जाता है. अगर आपने कोई मिट्टी की चीज बनाई है, याद करो छोटे थे तब हम मिट्टी के कुछ बनाते थे, कुछ स्ट्रक्चर्स, और जैसे ही बारिश आती थी वो सब खत्म हो जाता था, राइट? वो सब धीरे धीरे डिमिनिश होने लग जाता है. तो मिट्टी की चीज, मिट्टी के गेट को क्या हो जाता है, वो बारिश आने पे ढल जाता है, ओके. व्हाट विल बी द एंटोनिम्स? एंटोनिम्स क्या होंगे? अगर कोई चीज कम हो रही है तो उस चीज को अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, ऑगमेंट हो सकता है. ऑगमेंट मीन्स एक्सपेंड करना होता है गाइस.
इंक्रीज हो सकता है, इंटेंसिफाई हो सकता है. Okay, so antonyms are increase, intensify, augment. All these are antonyms of mitigating. Okay, so now come to the next word, that is deprivation. Deprivation, this is again a common word. Next one is deprivation. What's the meaning of deprivation? I can say lack of something. Okay, lack of something. Lack of something is deprivation, which is necessary. We need to add after lack of something, which is necessary. Okay, जो चीज जरूरी है उनकी कमी को, उनके ना होने को क्या कहेंगे? deprivation. जो चीज जरूरी है और आपके पास वो नहीं है तो आप उस चीज को आप क्या कहेंगे? deprivation. Okay, so what we call for synonyms. Synonyms क्या होंगे? Try to recall, please. Synonyms, I can say dearth. It's very important. Please remember this word. Scarcity. Okay, right? Lack. Shortage. All these are synonyms of deprivation. If I talk about the antonyms of deprivation, what will be the antonyms of deprivation? अगर किसी चीज की कमी है, okay, और अगर वो चीज आपके पास हो, that means फायदा. Antonyms में आप क्या बोल सकते हो? Gain, profit, advantage. All these are antonyms of deprivation. Okay, so if I talk about an example, so what will be the example for deprivation? अगर आपके बचपन की अगर हम बात करते हैं और बचपन में बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिल पाए, ओके, और आज आप बहुत रिच हो गए हैं और आज उन सब चीजों को आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, आज आपके पास वो सब चीजें हैं. सो मैं क्या बोल सकती हूँ? She eventually overcame. Okay, just wait. She eventually overcame the deprivations of her childhood. Okay, समझ में आ गया? सेंटेंस क्या बनेगा? She eventually overcame the deprivations of her childhood. So students, this is very simple word, I think. Okay, now come to the next word, that is influx. Okay, it's really again very important word, that is influx. So let's take an influx. word से क्या लगता है? देखो, influx, देखो कुछ in हो रहा है, okay, कुछ आ रहा है, right? So I can say a large number of people entered somewhere, a large number of things entered somewhere, or I can say an arrival or entry, a large number of people or things, right? बहुत सारी चीजों का आना, लाइक आप इंपोर्ट करते हो, ओके, सो इंपोर्ट करते हो तो आप इंपोर्ट में क्या करते हो? नंबर ऑफ थिंग्स को बाहर से मंगवाते हो अंदर, क्लियर है? इमिग्रेंट की बात करते हैं, इमिग्रेंट तो बहुत सारे लोग इंडिया में आकर रहते हैं दूसरी कंट्री से, दैट वुड भी, अगर कोई अपनी कंट्री में आता तो उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेंट. ओके, इनफ्लो भी बोल सकते हो, इनफ्लो ऑफ समथिंग. सो ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ इन्फ्लुएंस. कुछ भी अंदर आना गाइस, राइट? ओके, बट नंबर शुड बी लार्ज. एंड इफ आई टॉक अबाउट एंटोनिम्स, so what will be the antonyms of these words? If I talk about import, so I can say export, I can say emigrant. Okay, inflow का opposite क्या हो जाएगा? Outflow. So all these words are antonyms of influx. Okay, so let's take an example of influx. So what will be the example of influx? Can I put the example? So I can say the influx of winter visitors
adds to the wealth of the city. Okay, wealth of the city. That means एक winter season के अंदर lots of people, lots of visitors came to our country or came to our city like Udaipur and all. So at that time, due to influx of those visitors, the wealth of our city is somewhere increased. Okay, so influx means Anna, right? The next word that you have given is rejoicing. Can I rub this? Okay. Okay, क्या मीन होता है rejoice का? Please tell me. Rejoicing, I'm so sorry. What's the meaning of rejoicing? Tell me. Rejoice means होता है happy. Okay, rejoicing means क्या हो जाएगा? It's a noun. Happiness. और क्या बोल सकते हो happiness? That means glee. और क्या बोल सकते हो? Jubilation. Okay, or joy. Okay, all these are the meaning of rejoicing. That means खुश होना, खुशी is rejoicing. Okay, so these are the synonyms of rejoicing as well. Okay, so the important words I can say as in synonym or the meaning of this word: euphoria, ecstasy. These two words are very important. Please remember these two words. Okay, now may I come to antonyms. So अगर हम खुशी की बात करते हैं तो एंटीनिम क्या हो जाएगा उसका? एंटीनिम वुड बी, खुशी है ऑपोजिट क्या होगा? सैडनेस. सो सैड को ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लूमी, राइट? ग्लूमी. नाउन की बात कर रहे हैं तो और क्या हो जाएगा? मॉर्न. मॉर्न मीन्स भी दुख होता है. ओके, मॉर्निंग, राइट? बिकॉज द वर्ड ये मॉर्निंग सुबह वाला नहीं है. ट्राई टू रिमेंबर MOURN, दुखद. और दुख को हम क्या बोलेंगे? मॉर्निंग, बिकॉज दिस वर्ड इज अ नाउन. ओके, सो स्टूडेंट्स ऑलवेज सो और क्या बोल सकते हैं? देयर वाज rejoicing of victory. That would be the example of rejoicing. Okay, that means खुशी. Okay, that would be rejoicing. So students, today I just shared these words, vocabulary words with you. Okay, for the next session I just try to explain some tactics, some tips how to learn these words, how to learn this vocabulary. Okay, this is my first session for vocabulary. Just stay connected and tune with me. And if you think that this session is somewhere useful for you, so please don't forget to share and subscribe my video, and please stay connected with me. Thank you very much.